रिकॉर्ड तो करूं। सर पेपर चेक हो गए? नहीं अभी नहीं हुए। Okay, so last time we were talking about conductors and dielectrics, right? Uh, Yes, sir. what's the big difference between the two? Uh, in conductors, we have many free electrons, right? In dielectrics, we Yes, don't sir. have. We have very few free electrons, right? That's one difference. Another difference is if you connect battery across a conductor, all the electrons will try to respond to the electric field which exists between positive and negative side of the conductor. See, if you connect a battery to a conductor, there will be electric field in the conductor and the free electrons will try to react to that electric field. The electrons will try to vanish the electric field inside the conductor and they all start moving. They all try to get their kinetic energy from this electric field. And once all the energy is utilized by the electrons in the form of kinetic energy from the electric field of the battery, then there will be no more electric field in the conductor. The electron will be at rest, static, right? जब Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कंडक्टर हो, राइट, जब हमारे पास कंडक्टर हो और हम क्या करें कि उस कंडक्टर को बैटरी कनेक्ट करें, फॉर एग्जांपल इन दिस शेप, सो क्या होगा कि कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, और कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे इन अदर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो ये इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इतनी मूवमेंट करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू खत्म हो जाए तो सारे चार्जेस स्टैटिक हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। अब ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये वाला ये चल पड़े, इधर आके इधर एक पॉजिटिव के साथ मिले तो क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो चार्ज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब चार्ज रिड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जब सारे चार्जेस वापस इधर कंबाइन कर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाएगी, उधर चार्ज खत्म हो जाएगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के केस में सिचुएशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये किसी प्लास्टिक वायर है, से प्लास्टिक वायर, या हम इसको कह दे सपोज फाइबर है, ओके। फाइबर कौन सा मटेरियल होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। फाइबर को जब आप बैटरी अप्लाई करें, फाइबर को भी जब आप बैटरी अप्लाई करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फाइबर के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। लेकिन वो फाइबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगी। फाइबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश भी नहीं होगा। बात की समझ आ रही है। सो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज करंट भी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैनिश नहीं होता। कंडक्टर्स में जब बैटरी कनेक्ट करते हो, हमेशा रिमेंबर एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, छोटा सा बल्ब भी लगा ले, बेशक मोटरसाइकिल का बल्ब लगा ले, राइट। सो लेकिन रिमेंबर अगर ये वोल्ट बहुत हाई है, इफ दिस वोल्ट इज टू हाई, वो मोटरसाइकिल का बल्ब जल सकता है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने थोड़ा बड़ा बल्ब लगाना पड़ेगा, राइट, या कोई भी रेजिस्टर लगा ले। कहने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, बिकॉज शॉर्ट सर्किटिंग में अगर ये रेजिस्टेंस आप अवॉइड करें, बहुत स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे और आपका वायर हीटअप हो जाएगा। वायर क्यों हीटअप होता है,
अच्छा, सर वो उसी कोलिजन की वजह से जो हाँ, अंदर चूंकि बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाइज है, कोलिजन्स की वजह से हीट बनती है, और इन कोलिजन्स को हम रेजिस्टेंस बेसिकली कहते हैं। ये हमारी जो वायर है ये गर्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कंडक्टर के केस में जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सारे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इनिशियली तो जब तक वायर में करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन की फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है ना तब मुमकिन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन की फ्लो या इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी पकड़ता है, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो चार्जेस सारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी दो डिफरेंट सिचुएशंस है, कंडक्टर्स की और डाइलेक्ट्रिक्स की, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में। लास्ट टाइम हमने इसको वर्कआउट किया था, इस सारे फिनोमेना को। बाय द वे, यहाँ पे इस डायग्राम को यूज करके हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो ये है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, हम उस फिनोमेना को इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इससे इससे उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये हमारे पास जो है एक वायर है, वायर, और उस वायर में क्या है, हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, राइट। उस वायर में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, तो आइंस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ओके, तो दुनिया के बहुत सारे जब वो अपना काम प्रेजेंट कर रहा था, ही वाज क्वेश्चनड, आइंस्टाइन बताए फिर जमीन का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया। अगर आप कहते हैं कि या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आप जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनाई कर रहे। तो आइंस्टाइन ने उनको बताया कि हमारी ज़मीन में बेसिकली जो सपोज ये हमारी ज़मीन है, इसके इनर मोस्ट कोर में, विच इज़ हियर द इनर मोस्ट core of earth has many has lot of molten iron, right? तो बेतहाशा इनर मोस्ट कोर, जमीन के इनर मोस्ट कोर में बेतहाशा मोल्टन आयरन है, Fe2+ प्रिडोमिनेटली, और Fe3+ के मॉलिक आइंस भी है, राइट। चूंकि वो मोल्टन फॉर्म में है, तो आपको पता है जब भी किसी एटम को हम हीटअप करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक एटम है और इसको हम क्या करें, हीटअप करें, राइट। वेरी रफ डायग्राम बाय द वे। तो क्या होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ओके, जब एटम को आप हीटअप करते हो, टेम्परेचर पे लेके जाते हो, फॉर एवरी मटेरियल देयर इज अ टेम्परेचर जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिप्लीशन होती है ना। सेम इज द केस फॉर आयरन, मोल्टन आयरन। Since the temperature is very high, it's molten in the molten shape, so it is free from the electrons. Fe2+ has 2 electron deficiency, Fe3+ has 3 electron deficiency. Besides this, we have also copper ions and aluminum traces and many other elements, right? But the thing is, this molten iron is moving around, right? This molten iron is moving around, right? This molten iron is moving around. So when a charge moves, what happens?
It makes what? When a charge moves, it makes what? Magnetic field. This is what we have. This is what we have by definition. When a charge moves through a conductor, we have the magnetic field. You know that, right? Is this clear? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, आ sir, रही है. आ रही है. Okay. So the question is, if a charge moves, there's a magnetic field. Okay. So this also means, suppose if I take the hydrogen atom, right? Hydrogen atom has one proton and one electron moving around its orbit, right? With tremendous speed. So suppose this is my hydrogen atom, right? So that means in the hydrogen atom, one electron is moving around with the tremendous speed. That also means hydrogen is a very, very powerful magnet, hydrogen atom, and it's true. But the problem is hydrogen doesn't like to exist in atomic form. Hydrogen will always pair up with another hydrogen. Hydrogen will always pair up with another hydrogen atom. But it will pair up in such a way that the electron spin in the two hydrogen atom is precisely opposite. So if the two hydrogen atoms have opposite electronic spin, they will pair up and will make a hydrogen molecule. Now, if I use my right hand rule, if I use my, say these are my finger, right? If I use my right hand rule and this is a thumb, by right hand rule, if I use the right hand rule, let me turn on my video, I guess. Okay, can you see that? If I use my right hand rule, right? Right, this one, and say the finger points to the electron spin, right? Fingers points. So the magnetic moment is perpendicular to the electron spin. It's vertical, perpendicularly upward. Yes, sir. Right? So when we have two hydrogen atoms, when they have the opposite electronic spin in opposite direction, one is suppose clockwise, the other one is suppose anti-clockwise. So there, see the clockwise, right? They have the downward magnetic moment, the anti-clockwise have upward magnetic moment. So when they combine together, they will make a hydrogen molecule. Now, since the magnetic moment are opposite to each other of the two atoms, they effectively cancel the magnetism of each other and leaving the hydrogen molecule as almost showing almost zero magnetism. Okay, so this is the reason that we don't the materials, or not all materials, exhibit magnetism, because every material have electrons, they all move around. So every material or every atom by definition should be a very, very powerful magnet. The problem is when they make a molecule, or even inside in the elemental form like in the iron, they make clusters of the electronic spin. Some clusters, some domains, some group of atoms have one electronic spin in one direction, other group of atoms have electronic spin in some other direction, effectively making some elements showing zero magnetism. But iron can be a very good magnet, can be made a very good magnet. Okay, can show up very good magnetism. We'll see those cases later on. But by definition, whenever charge or ion or such particles move around, they show magnetism. That was very old theory. That was very old theory, and people believe in this theory for years, for centuries, right? But it was Einstein who, for the first time, said that there is no magnetism in this universe. We developed some wrong theories about magnetism,
and he proved his theory by the use of special theory of relativity, his special theory of relativity. So how he proved that? He said, see, if I go back to my chapter number one, uh, if I go back to my chapter one, I told you that if we have this positive charge, we have the electric field moving out of it in all possible directions. Yeah, if you remember. Okay. And I also mentioned over there, if I have another positive charge, then the electric field of this is also in all possible directions. But there's a little problem. The the electric field is in form of straight line, and two electric fields, this blue and the green electric field, they cannot cross each other. They cannot do that. So what happens effectively? They those lines of forces, those lines of electric lines of forces, they reorient themselves and they starts running parallel to each other. Okay, so now the electric field is no more a straight line. However, it is like this form. Okay, so the electric field lines of forces, because they cannot cross each other, they change their paths. Okay, so that was a little theory we developed in chapter one. Now coming to how Einstein proved that there is no magnetism. So if I take this big conductor, for example, this huge conductor, okay, this conductor, right? And by definition, I will always have magnetic field whenever charge moves through it. Okay, so if I connect, so if I connect battery to it, if I connect battery to it, I will have the electric field inside, right? There will be a strong electric field inside. Okay, there will be strong electric field inside. Okay. Also, I know that in this material, say copper, say this is copper. Okay, in this material we have say some big nuclei. Okay, from those nuclei we have some free electrons. Electrons have been removed from those nuclei, so we have some free electrons. Okay, now look here, this positive nuclei has, it's this positive charge is very much static. Remember, this positive charge is very much static and its electric field is like in this shape. Okay, on the other hand, this negative electron is very much free. This electron is very much free. It's very much free. Now when I apply the voltage V, the battery, when I apply the voltage V to this conductor, what happens? Mass of the electron is nearly 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, right? And mass of proton is nearly 1000 times mass of electrons. So mass of proton has lot of inertia. So whenever I apply this electric field, it's the electron which is very light will first respond to the electric field and will try to get kinetic energy. So the kinetic energy of the electron will be VA minus VB. And where is VA minus VB? VA is, suppose this is VA and this side is VB. Because of VA minus VB, we have this electric field. Because of VA minus VB, we have this electric field. Okay, so the difference of this potential difference, the electron will get its kinetic energy and will start moving. The question is, why shall not this positive charge, why shall not this positive charge move? Right? इस positive charge को भी तो move करना चाहिए ना?
ये क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज मूव कर पाएगा? सर उसका मास ज्यादा इसलिए नहीं करता। हाँ, वो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, सारे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्ट्रक्चर में, वो एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो हेवियर ऑब्जेक्ट्स दे विल नॉट मूव, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट्स मूविंग आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, राइट। इट्स मूविंग आउट इन ऑल पॉसिबल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, कौन सा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कौन सा है? एक ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक हमारे पास कौन सा है? रेड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड राइट। वाला सर। हाँ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ब्लू वाला सर। यस, ब्लू वाला, राइट, दिस वन। अब सर देखिए, ब्लू वाला इनसाइड नहीं होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए इनसाइड हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एग्जैक्टली। लेट मी मेक इट दिस वे, ओके। Say this is our electron, all of its electric field is inside, okay. But the thing is this blue electric field cannot cross this green electric field. This cannot cross the green electric field. This cannot cross the green electric field. So what happens? It's just like that green electric field was coming like this. It's now like this way. Yeah, this way. Because it cannot cross the electric field. Similarly, this electric field which was coming like this will have this sort of path. Okay. Now this blue electric field again cannot cross this thing. Okay. So what happens? What happens? This electric field, this red one will try to make this sort of path, right? And the blue one will make this sort of path. So see, because of the electron movement, what happened? Because of the electron movement, the electric field inside the structure, because of the electron movements, the electric field inside the structure is very random. Because of this movement, the electric field inside the structure is very random. It's no more straight lines. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का बहुत बहुत ज्यादा रैंडम हो गया, स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में अब नहीं है। समझ आ रही है ना यस बात की? ऑल्सो हमारा ये जो ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से आ रहा है, ये भी कुछ इस तरह अजीबोगरीब बिहेव करने की कोशिश करेगा। सी, ये रेड वाला ऐसे जा रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिक्स सी डायग्राम बन रही है अंदर। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जिस फिनोमिना को आप मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हैं, वो असल में यही डिटीरिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी शेप अजीबोगरीब हो चुकी है। ओके, समझ आ रही है? तो आइंस्टाइन ने कहा कि आपका जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, जो असल में कंडक्टर में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इन कंपैरिजन टू द स्टैटिक चार्जेस जैसे न्यूक्लियाइज है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में, और जो बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके रिलेटिविटी में ये ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डिटीरिएशन को असल में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हो। समझ आ रही है बात की? So Einstein said there's no magnetic field. Again, it's the electric field. It's a kind of, it's a form of electric field, a little bit different shape of the electric field. And he proved all these things through his theory of relativity, special theory of relativity. Okay. So that was the whole theory about the flow of charges and the electrons. Now we want to see a few more interesting things about this theory. Previously we showed that these charges they collide with many of such other particles like the hydroxyl ions and the nuclei and the other free charges also.
So they make their direction very random, and because of the external field, this one, they still move towards right direction against the electric field. So every time, as we said previously, every time an electron moves and makes a collision, right? Every time the electron moves and makes a collision, it changes its path. After the collision, the electron may come down like this, or may go back like this, or may go in this direction. So electron just scatters. But very soon, when the electron finds a vacant space again, it will move against the electric field. After scattering, when the electron finds a vacant space, it will again move in the vacant space. And in the process, what happens? The electron starts moving and will again gain its kinetic energy. So the velocity of electron just before scattering is Vd. It's called as drift velocity. And the time taken by the electron to make two successive collisions is called as scattering time. So today we will talk a little about the scattering time and the drift velocity. Okay. Any question here? No question, sir. Okay. Okay. We covered previously that every time we have the electric field, the electron will move against the electric field and will get its acceleration. Also, the mass of the electron was this number, but that shows a free space value. But when it's moved in the material, its mass is a little bit higher than it. And when the electron starts moving, it constitutes a current. Current is dq by dt. When the electron moves in the electric field, it makes a current. Current is called as flow of charges, and it's the rate of change of charge is the current. Dq by dt is the current. So it's the rate of change of charges. What we mean by this rate of change of charges, remember, if suppose I have this conductor, say we have this conductor, and let we have this battery connected, so plus minus, and when the electrons moves in this direction against the electric field is in this direction. So see here in this region, a decay, if this electron comes here, this electron comes here, this electron comes here, this electron comes here. So here in this region, if I call this as region A, and the other one is region B. So in region A, charges are increased. The electron number is increasing. Okay. So dq by dt is positive. But in region B, the electrons are depleting. So dq by dt is what? Is negative. समझ आ रही है ना बात की समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है. हाँ, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो लेफ्ट में dq by dt राइज हो रहा है, चार्जेस बढ़ रहे हैं. ओके, बिकॉज dq, look here, if this is time and this is charge, if it is rising, dq by dt, this is region A, in region A. Okay, in region A we have the rise, right? In region B, we have what? In region B we have dq by
dt. It's negative, right? This is region B. The slope is negative. You can see that. Charges are decreasing, right? If I call this electrons, I will replace this one by electron. This one also by electron. Okay? बात की समझ आ रही है? Okay? So कहने का मतलब ये है कि रीजन बी में जितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है, रीजन ए में उतना इलेक्ट्रॉन राइज हो रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी भी कहते हैं. ओके? सो करंट आई इन रीजन ए, करंट आई कितना है? इन दिस रीजन करंट आई कितना है? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी इन रीजन ए. ओके? इन रीजन बी करंट कितना है? I equals to minus dq by dt. Because region B में करंट ड्रॉप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, so it's a minus slope, so current is the same thing no matter region A है या region B है. region A और B में करंट एक ही जितना है, लेकिन region B में चूंकि आपने एक बॉर्डर लाइन खींची है, तो रीजन ए में इलेक्ट्रॉन की फ्लो बढ़ रही है, बट रीजन बी में इलेक्ट्रॉन की फ्लो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. ओके? Yes, sir. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी भी कहते हैं, राइट? ओके? इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी. Continuity, sir. कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी की क्या स्पेलिंग है? चेक कर लेते हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन भी इसको. Sir, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. Okay, इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं, राइट? जस्ट चेक द स्पेलिंग ऑफ कंटिन्यूटी. दिस व्हाट इज नॉट क्लिकिंग इन माय माइंड, राइट?